Golden Jubilee means 50 years of glorious Imamat. celebration that we do for Hazrat Bab. It is 50 years of his guidance. This is a time when we can remember what our Hazrat Imam has done for us. Just how well the Ismaili community had prospered became clear when on his Jubilee anniversary, they presented him with his own weight in gold, then diamonds, and finally platinum. सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली। सुल्तान मोहम्मद शाह जब आए उतरे गाड़ी से तो ग्रीन कलर का साफा पहने हुए थे और बहुत दुआ आशीष दी सबको। और फिर जब सुल्तान मोहम्मद शाह को कांटे में बिठाए गए और जब सोना डालने लगे तो सुल्तान मोहम्मद शाह का कांटा ऊपर ही नहीं उठ रहा था। सुल्तान मोहम्मद शाह का एक पाँव आधा नीचे ज़मीन पे और फिर सोना कम पड़ गया तो औरतों ने सब जेवर निकाल निकाल करके देना शुरू किया। फिर जब औरतें एकदम तस्बीहां निकालने लगी, सलवात पढ़ने लगी और जेवर उतार उतार करके देने लगी तो सुल्तान मोहम्मद शाह हंसने लगे। हंस करके पट से पाँव उठा लिया ऊपर, पाँव उठा करके और फिर बोले कि जेवर सबका वापस कर दो। और फिर सोना बच गया, सुल्तान मोहम्मद शाह का वज़न कम हो गया। इसके बाद अभी कांटे से उतरे नहीं थे और सुल्तान मोहम्मद शाह का साफा गिर गया नीचे। और उसके बाद फौरन सुल्तान मोहम्मद शाह एकदम मतलब टेंस हो गए। फिर बोले कि अब ये हमको कुछ भी नहीं बोलना है मगर ये रोशनियाँ वोशनियाँ सब और डांडिए रासड़े सब बंद कर दो और दरखाना जमात खाना 4 बजे शाम को मुलाकात करेंगे। फिर 4 बजे आए वहाँ दरखाना जमात खाना तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने काला पट्टा बांधा हुआ था हाथ में वाइट ड्रेस के ऊपर और बोले कि जिस वक़्त मेरा साफा गिर गया सर से उसी वक़्त मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त राजा पंचम जॉर्ज का रूह कब्ज़ हुआ, इसलिए मैंने सारी लाइटें सारी खुशियाँ सब बंद करवा दी। और उसके बाद में कोई खुशी नहीं मनाई गई, कोई लाइटें नहीं हुई और सब डांडिया रासड़ा सब बंद था। बस यही मुझे याद है, उसके बाद में मेरे को कुछ याद नहीं। Regarding Diamond Jubilee of Sultan Muhammad Shah at Bombay in 1946, at that time we were all settled in Agra, and you know there was a UP Jamaat where it consists of Kanpur, Agra, Jhansi, Banaras and everything. So there was all a small pocket of Ismailis in all place except the Kanpur and Agra has a big Jamaat. So we formed a joint scouting of UP scouts and we went to Bombay and we offered our services to the Diamond Jubilee organizing committee. It would be not out of place to mention here that war was over in 1945 and people were frustrated for so many years of trouble of war. Then people from all parts of the world, especially from all over India, which includes UP and everything, plus lot of Ismaili came from Burma, Africa, and so many places. It was very important to mention
कि बिफोर Diamond Jubilee was to held at Braban Studio at Bombay, there was a big mix-up. The war was over at that time, and you know, in Bombay there is our Khadak Jamaat Khana, which is called Darkhana. Behind that is a port. There was a big blast of the ship, and lot of people was died. Somebody says, I have not witnessed, okay, in our Darkhana, there is a big gumbad, and people say there was some white color shadow which was throwing away all this rubbish was there, because lot of gold, silver, everything was scattered everywhere. And emergency was declared in Bombay, and curfew was imposed, and it was so bad situation, order was shoot at sight. At that time, you know, British government was in power. But it is a miracle, you say. People say, now only 4 or 5 days is left in Diamond Jubilee, and you cannot go out of this. We have to decorate Braban Stadium. We have to make a stage, to arrange lot of guests coming from there. But it was Maula's Mehrbani, that within 3 days, everything became normal in Bombay, and people started coming, going, and all preparation had started. डायमंड जुबली के टाइम पर ही, यानी उसी सन के अंदर में सुल्तान मोहम्मद शाह आगरा पधारे थे, और आगरे में उस वक़्त वो 15 दिन के मेहमान रहे थे। हमारे आगरे के रईस हजूर मुखी अहमद भाई पूंजा, जो कि मतलब ये अपने जो वज़ीर मुबारक भाई हैं उनके ससुर, उन्होंने 15 दिन अपने यहाँ मेहमान रखा था, समझे। 15 दिन मेहमान रखा उन्होंने, और समझे कि नहीं, उसके उस वक़्त में हम लोगों को सबको जितने डिस्ट्रिक्ट की जमात थी वो सब पूरी आगरे से बाहर, मतलब थोड़ा दूर पे जहाँ सेंट्रल जेल की तरफ है, वहाँ एक सेंट्रल जेल का जो ऑफिसर था, जो इंचार्ज, वो भी अपने सुल्तान मोहम्मद शाह की फैमिली के अंदर के था, मतलब रिश्तेदारों के अंदर में था वो। उसने कहा कि यहाँ जब आ रहे हैं आगा खान साहब, तो हम इंतज़ाम कर देते हैं। उसने सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ कटवाई, जंगल को समझे कि मंगल बनाया, और सबको कैंप लगा दिए। कैंप के अंदर में सब पूरी डिस्ट्रिक्ट की जमात उसमें रहती थी, समझे। सुबह शाम समझे जमात खाने के अंदर जाना आना, समझे कि नहीं। और उसी दरमियान के अंदर में ये जो हिंदू मुस्लिम की राइट हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की राइट जो हुई, उस वक़्त में रात के वक़्त ऐसा था कि अब कोई आके, हिंदू लोग आके उसके कैंप के अंदर में आग वाग ना लगा दे, समझे। तो सब वॉलंटियर वगैरह सब होशियार रहे, और सबों को तैनात कर दिया गया, समझे। और उस वक़्त में हम लोग तो छोटे छोटे थे, 10-12 साल के, समझे। हमने कहा चलो हम भी तैयार हैं, बोले। और हम पत्थर वत्थर लेके कैंप के अंदर में जमा करके रख लिए, समझे। कोई रिवॉल्वर लेके गया, वो कोई कुछ लेके गया, सबके पास रिवॉल्वर तो उस वक़्त में थी, समझे कि नहीं। तो उस यहाँ क्या करना हुआ कि जब भी आया तो वो उधर, यानी ये आपका सेंट्रल जेल के पास से, समझे कि मेन रोड है, और वो हाईवे से अंदर की तरफ जब आता है आदमी, गाड़ी एक आती है बहुत ज़ोरों से। वॉलंटियर ने देखा कि ये गाड़ी कोई ऐसे लोगों की है, ऊधम मचाने वालों की, ये कोई आग वाग ना लगा दे। वहाँ से उसने वॉलंटियर ने उसको विसिल दिया, वो उसने आगे को दिया, उसने आगे दिया, ये कैंप तक पहुँची, समझे। वो गाड़ी चली आ रही है, गेट के ऊपर आई, जो कोई रिवॉल्वर लेके, कोई पत्थर लेके, कोई डंडा लेके, समझे कि नहीं, खड़ा हो गया, समझे कि नहीं। और जब दरवाज़ा खोला गया तो उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह बाहर निकले, सब हैरान रह गए कि अरे क्या हुआ, बोले, समझे। ये सबों ने डंडे वंडे सब फेंक दिए, समझे कि नहीं। और फिर सब जमात करने आए, जमात यानी दीदार करा। मतलब मैं वो बोले, सुल्तान मोहम्मद शाह बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए आया था कि मेरे मुरीदों को, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उसको देखने के लिए वो लोग वहाँ पर आए थे। काफ़ी वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन हुआ था, यहाँ तक कि बर्फ़ की चारों तरफ बर्फ़ के लगाए गए थे कि गर्मी नहीं होवे। और जब हाज़िर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को
उसमें तोला गया। तो एक साइड में डायमंड थे, एक साइड में सुल्तान मोहम्मद शाह थे। पर सुल्तान मोहम्मद शाह देखने मांगते थे कि उसके मुरीद क्या करते हैं, कितना ये लोग कर सकते हैं। तो जब सुल्तान मोहम्मद शाह को बिठाया गया तो कितना डायमंड डाले, इतना डायमंड डाले गया और वो नहीं हो रहा था। फिर तो सुल्तान मोहम्मद शाह भी देखे कि उसके मुरीद अभी थक गए हैं और ज़्यादा करने से मतलब समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो फिर सुल्तान मोहम्मद शाह ज़रा सा अपना को वो करे तो फिर बैलेंस में आ गया और मुरीद लोग भी खुश हो गए कि हाँ अभी इंशाल्लाह फिक्र नहीं, डायमंड कम नहीं होंगे। Miracle happened and that lock straight on Hazrat Imam weight and that was there. The Platinum Jubilee took place in Karachi in 1954, February. And we were in Dhaka at that time, and my mother was a member in the council, and she had received a card to attend the ceremony, and I also received a card to attend it. So the both of us left by plane to go to Karachi, and we reached it a couple of days earlier, and we went to Jamaat Khana that evening, and there was a lot of, khushyali going on, dandiya and rasura and singing and all that, and there was dinner there. Then the next day also, the same thing, we went for prayers and met a lot of people, and everybody was so happy. And I think the third day in the morning we had to reach early, although the timing of the celebration was 12 o'clock in the afternoon, but we reached by 10, so that we got very good seats right in the early beginning rows. They were in a good chairs, set out. And a lot of people were there coming in. And then the Imam came. And again, was again a revolving stage right in the center of the grounds. And this time also it was set up differently, but it was beautifully decorated. And there was a different kind of weighing scale. And the chair was beautiful. This was like a throne, where the Imam came and sat on it. He was wearing a white achkan, knee-length achkan, and he was wearing that, what we call the safa with a, it seemed to be made out of some sort of a sari, light-colored, thin sari, muslin sari, and it suited him very well. And he was so happy. And Mata Salamat was there with him. Prince Sadruddin was there with him. And the other family members, I'm sure, were there also. But we came to the stage and he sat down, and again the same thing, the process of the weighing ceremony started. And this time I saw maybe the same amount or maybe a little less or more, but it was very beautifully done. It was a beautiful day. The sun was shining, but it was not hot and it was so comfortable. And there were lots of people, and all the time, people were kept saying the salawat throughout the ceremony, which took half an hour, 3/4 of an hour complete. Hazrat Imam Sultan Muhammad Shah at that time donated to Jubilee Trust, which the trust has given a lot of charity for a lot of things, and also Diamond Jubilee schools and so many things were established with that money. That money was also given to the small cooperative banks of India, where the Ismailis are settled so that they can take benefit of it. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I have had the pleasure of visiting Bangladesh
on 5 previous occasions, and each has left me with the richest of memories. To be here again to celebrate the silver jubilee of my accession to the Imamate of the Shia Imami Ismaili Muslims is therefore to renew ties of long-standing friendship. You